Hello, sister. Let's go for breakfast. So it will be like it is a Churao island. And even when the Portuguese were living, they used to call it as Ilias dos So guys, yeah, it's fine. Actually, No, it camera. See? कोई मर्डर, मैं सुशन आदमी था, कोई मर्डर किया, मेरे को पकड़ा, ये देखो। फ्रेश फेनी बन रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। How is it? So how do you come to know that a feni is a nice street one? Why do you think there are sticks put in the water? Like is there like a line of the sticks which are put in the water? Why do you think this? as in you can't go that side. Can be, but not a fully right one. Watermarking. That's the mango. Apart from that, what do you think? All the birds. Fishes. Clustering fishes. Yes. So early in the morning you have the fisherman coming and he will put the net down there. So what happens is during high tide, as you can see right now, most of the fishes will go near the mangrove roots for their food, etc. So the fisherman comes from behind, he puts a net over there. In the low tide, what happens is the water goes out, but the fishes are all caught inside. The fisherman doesn't have to work too much, he just has to come with his boat and just start collecting all the fish. White-breasted king. तो अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, अंदर एंटर कर रहे हैं। अब जैसे जैसे हम लोग यहाँ से अंदर एंटर करते रहेंगे हमें और अच्छा व्यू मिलता रहेगा। This nice white bird sitting on that stone, so that's an egret. That's egret, right? Yes. Little or intermediate? It's little egret. And there's a sandpiper over there, right on the opposite. Here it is. Small bird on the stone is a sandpiper, and the one that just flew is an egret. Actually, पता क्या है? Jokes aside, उसको अगर genuinely अगर उसको टेम्प्ट करना है ना तो उंगली काट के 2-3 बूंद खून पानी में डालो। And then you'll see like this. Maybe don't want it. We're done. फिर वो आपके साथ आके बैठेगा। Hello sister. Let's go for breakfast. So it will be like, thank you for the welcome drink. What the rest of my meal? It's not enough to do the fishing, but you still find fishermen coming. They do the crab fishing. Right. Yeah, So guys, yeah, it's fine. Actually, ये आके देखो। तो यहाँ पे मिला है हमें क्रोकोडाइल। अब देखने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ है कहाँ नहीं है, छुप ना गया हो। आपका ब्रेकफास्ट। तेरा breakfast, मेरा। Oh, there are two. Where's the second one? ये तो एक ही दिख रहा है। वो आगे था ना, बड़ा था, वो पानी में ये जगह तो ये देखो इधर बैठा था, ये देखो। So basically Goa happens to be a place which was ruled by a lot of rulers. So during one of the, I would say, we don't exactly know which was the rule, either Shahis maybe, or maybe prior to that as well. So he was the one who introduced the crocodiles because he was afraid of the enemies. Because whenever the enemies are coming from land, they are smart enough because you have soldiers keeping an eye over them. Sometimes the enemies were smart enough to, swim it or come down from the river and then attack into the forts wherever they had. Because every time the fort has like a moat system that you have, you surround your fort with water. That is the time when they started dropping these crocodiles over there for the enemies. If they try to come from the river or from the water bodies, that is the time the crocodiles used to attack over them. Full day buffet. Yes. इधर बैठा है कॉमन किंग। वो लास्ट वो जो सामने डाली पे बैठा है, वो कॉमन किंग। That's a cormorant in the water. That's there. a cormorant in the Yes. and there's a common kingfisher on And top. this bird sitting here is a common kingfisher.
बहुत मज़ा आ रहा है। और जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं वीडियोस, बहुत सारे बर्ड्स भी देखे मैंने। कुछ बर्ड्स मैं कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि अपने पास इतना बड़ा कैमरा तो है नहीं भाई कि बिल्कुल ठीक से क्लियरिटी के साथ कैप्चर कर पाऊँ, पर जितने भी कैप्चर कर पाया वीडियोस वगैरह में आप देख ही रहे हैं साथ साथ मेरे, तो मज़ा आ रहा है। ठीक है, जॉयफुल मोमेंट है हम सब के लिए भी, और भी लोग हैं हमारे साथ, तो मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं। तो ठीक है यार, इसी को कहते हैं लाइफ। अगर कहीं पे आए हुए हो तो ऐसे ही फ़न करना चाहिए, वहाँ की जगहों को एक्सप्लोर करना चाहिए, है ना, तभी तो पता चलेगा आपको वहाँ के बारे में, और कैसे पता चलेगा। What happens is right now the mangroves usually grow where you have a mixture of a sweet and a salty water. But during monsoon, the plant can breathe and you have availability of a little bit of fresh water as well because it gets mixed over here. But during summer, what happens? The salinity of the water increases drastically, and these trees themselves, they are not able to means they can grow in the salt water but cannot take that much of excess salt as well. So these roots are called as a breathing root because they help the plant in breathe. Along with that, they excrete the excess amount of salt which is there in the water. And also this the keychad or the mud that you can see is a very keychad one. You cannot breathe inside, so that's the reason they come out so that the plant could breathe as well. Jump, jump! We are close to 50s. When you reach over there, do some action in the camera. Yay! Punjabi Bangla. Yeah, that was more like it. And laces. तो हम लोग वहाँ से तो निकल चुके हैं, अब यहाँ पे अपना छोटा सा चाय ब्रेक ले रहे हैं, चाय एंड कोल्ड ड्रिंक ब्रेक। जिसको भी कोल्ड ड्रिंक पीनी है कोल्ड ड्रिंक पिए, जिसको भी चाय पीनी है चाय पिए। उसके बाद आगे निकलेंगे यहाँ से अपने 2 व्हीलर पे, और फिर देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है और अच्छा देखने को और आप लोगों को दिखाने को। Words were pretty difficult for them, so they started calling it as a Churao island. And even when the Portuguese were living, they used to call it as Ilhas dos Fidalgos, that is the island of noblemen, because all the noble personalities used to reside on this island. But prior to the Portuguese coming, you had the Shinvi Brahmins who used to live on this island. And back then, the Shinvi Brahmins used to call this island as Chudamani. And there's a very interesting story of how this island got its name as Chudamani, to explore which we are going to the temple. So from Chudamani, people started calling it, shortening the name from Chudamani to Chodan Sodne, and from Chodan Sodne it got its name as Churao Island. And technically, like I'm keep on saying it is an island, but technically if you go and see in the Google map, it doesn't look like an island anymore. It's technically not an island because now it has been connected by roads and bridges to the other lands as well. But they still call it as an island. ये हमारे महादेव का मंदिर, कृष्ण जी का मंदिर है। सुन लेते ना उस टाइम जब वो बता रही थी। मैं डॉग के साथ खेलने चला गया था। कल्लू बॉल शिव जी भी बात कर ले। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो एवरीबॉडी, यहाँ पे हम लोग हैं योगा इंस्टीट्यूट शराव आइलैंड पे, और हमारे टूर के हिस्से का आज हम नाश्ता खा रहे हैं योगा इंस्टीट्यूट पे। और आप अभी एक बार कैमरा पैन होता है तो आप जिस पक्षी को आप देख रहे हो इनको बोलते हैं टर्की, और ये उड़ नहीं सकते हैं, और ये जिसने पर फैलाए हुए हैं ये नर है, और जो उसके बगल में घूम रही है वो मादा है इसकी। अब देखो आप लोग, मासूम के बारे में बता रहे थे कि ये नर और ये मादा है, मेल फीमेल, और ये उनके बच्चे हैं जो उधर घूम रहे हैं, छोटे छोटे से 2-3। यस No, they're not interested. Oh no, camera is on. They know it. Camera. See. तो यहाँ पे आ चुका है सात्विक भोजन, ग्रीन चटनी,
Red chutney with parathas. Masi, how's the taste? It is yum. The meaty chutney as well as green chutney both are tasty. आप भी दिल्ली का है? हाँ जी अंकल। कब से हो अंकल आप यहाँ पे? इधर मेरे को अभी 15 बरस हो गया। हम था पहला बम्बई में 55 बरस काम किया। उधर रिटायर हुआ। मैं ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर समझते? ऑलराउंडर। हाँ, पाइप फिटर, वायरमैन, हाँ जी। टाइल फिटर, हाँ जी। गोंगड़ी और सब पूरा का पूरा पेंटर सब उधर कोर्स किया मैं। अभी कितना बरस है मेरे को? 80 पास हो गया। 80 पास हो गए? कितने साल के आप? अभी 81 साल हुए। 81 साल हुए। 1942 है। 1993 में हिंदू मिश्रा का लपड़ा हो गया। मुंबई राइट्स। हाँ, तो उधर कोई मर्डर, मैं शिवसेना में था, कोई मर्डर किया, मेरे को पकड़ा। ये देखो शिवसेना में थे आप? ये देखो, ये क्या हाँ जी, है? हाँ जी, हाँ वो जी। सांकली डाला। सांकली समझते? नहीं अंकल। ये चोर लोग को डालता है ना, ऐसे बेड़ी। हाँ जी, हाँ जी, पेड़ी। हाँ, ये अभी भी मार्किंग गया है नहीं उसका। ये देखना, कोई जगह नहीं काटना मगर है। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि सर मेरा बेटा जैसा तुमको बोलता है। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कुछ यही नहीं है। तो अंकल अब ये लाइफ जो अभी आप जी रहे हैं, शांति वाली लाइफ, ये कैसी है? हाँ, अभी ये कैसी है? एकदम अच्छा है, मस्त है। शांति, शांति। साउंड, योगा, किसका लफड़ा नहीं, किसका ये नहीं है। किसी की कोई टेंशन नहीं। पात्मा क्या बोलता है, सुनना है। कैमरा में जैसे नहीं माना। अच्छा, इधर नहीं बनाना, इधर तो बना सकते हैं। ये देखो भाई व्यू, और पूल कितना प्यारा है यार नीचे यार इनका। नीचे का शूट ज़्यादा नहीं कर सकता था जहाँ पे योगा चल रहा था वहाँ पे, क्योंकि फॉरेनर्स वगैरह थे सारे, तो उनको प्रॉब्लम होती है। और जिन अंकल से अभी मैं बात कर रहा था उन्होंने मुझे बोला कि उधर का शूट नहीं लेना, अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं ऊपर आया और ये व्यू कैप्चर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। देखो कितना प्यारा लग रहा है। चलिए अब नीचे चलते हैं, हमारे चोपड़ा साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे आए हैं अब सब लोग फ़ेनी टेस्ट करने के लिए। अब देखो, मेरा तो पता नहीं भाई करूँगा नहीं करूँगा, मन सा तो नहीं कर रहा क्योंकि अभी थोड़ा और घूमना है अपन को, पर एक दिल कर भी रहा है कि यार यहाँ तक आया हूँ, फ्रेश फ़ेनी बन रही है तो टेस्ट करके देखते हैं। ये भी एक अलग ही वो है अपने लिए, क्या कहते हैं उसको, एडवेंचर। अपने लिए ये भी एक एडवेंचर है, तो चलते हैं अंदर, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो। Neat one dish because this is all locally made, like the local. It is made by Prakash Kaka himself. Just like the one that I showed you in the beginning, it's the same distillery that he has. He has like multiple distilleries over there where he makes this Feni himself only. So have a sip of it, and then I'm gonna add some soda, some ginger soda, some limca, and the chilies and the limes as well that I'm gonna add to the cocktail that we will be trying. So who all are up for the cocktail? Cheers people. Oh, this one is also bad. Sorry? I've had worse. Oh, is it? Yeah, believe me, I've had worse. I want to taste it just once. This will go down like kerosene on your इसका टेस्ट अभी तक सुलाने तरह नहीं आ रहा, वाइन की तरह है। हाँ, मतलब हल्का सा वो है, but believe me, I've had worse than this. This is very well distilled. How is it? So how do you come to know that a Feni is a nicely distilled one? Is what happens is if you by chance even if you're having like a एक बार वाला चेहरा दिखा दो, वही वाला साई प्रसाद वाला, I think you're the happiest. तुम यहीं रह जाओ एक आध दिन. है ना? उधर बोला था खाना खिला दे, इधर बोला पड़ेगा बीड़ी पिला दे। yeah. So basically
The thing is, when you're drinking it, make sure that you don't smell it because the chili might be spicy, so you get that punch of the chili. Okay, so don't smell it, and while drinking, either keep your finger like this and drink it, or remove the chili. Shouldn't hit your face as well. Hello. Nice. It needs a little ice, but otherwise it's very nice. It's mellowed down the Feni, but the lemon adds a great flavor to it. Nice. चिली का भी आ रहा है। मेरे को जिंजर दे दो। That's what I want. You got me hooked on this. ये मिलेगा वहाँ पे जाए करके? कहाँ पर? I don't know. And in the address, do mention the pin code, okay? And this is where you can write anything that you would like to write your loved ones, to your wife, maybe to your boyfriend, anyways. But anyways, चलेगा. So I was just circulating this. You can select the ones and then you can go ahead. हमने लिखा है अपनी लाडो के लिए। खाना खा लिया अंकल? हो गया खाना हो ये देखिए हमारे अंकल जी हैं। अंकल हाथ ला दो ऐसे करके। अपन आ चुके हैं अपनी सोसाइटी में वापस। अब जल्दी से स्पीकर को चार्ज पे लगाते हैं और फिर अपना पूल में छलांग मार देंगे। मौसम हो चुका है बढ़िया, बस यही प्रे है कि बारिश गिरने लग जाए तो ओए होए सोने पे सुहागा वाला सीन हो जाएगा भाई फिर तो बिल्कुल ही बिल्कुल। तो चलो अब आप लोगों को, मतलब आप लोगों को नहीं, इस कैमरे को यहाँ सेट कर देता हूँ और फिर थोड़े से पूल के मज़े लेता हूँ। भगवान कसम बता रही हूँ, मेरे को बाल गीले नहीं करने थे, मुझे वापस बाल धोने पड़ेंगे।